Then this part is cardiac, this part is pyloric, this part is fundus. Okay, so technically there are three parts of the stomach. मतलब properly fundus ऐसा नहीं होता, थोड़ा अलग होता है, पर बता रहा हूँ. There are three parts. Towards the cardiac region, इसका cardiac sphincter आता है. Towards the pyloric region, therefore it is known as pyloric sphincter. Am I clear? अब sphincter का काम क्या होता है? It acts as a gatekeepers. जो फूड अंदर जा रहा है, वो उसको रेगुलेट कर रहा है ताकि स्टमक के अंदर प्रॉपर जाए and doesn't come out. Regulated मतलब to come out. ये vomit, antiperistalsis. तो कभी कभार ये antiperistalsis से बाहर आ ही जाता है. क्यों? क्योंकि बहुत लोड होता है स्टमक. One, when you are eating too much overeaten, ये होता है. When the stomach is disturbed. Okay, two. An infection can result into vomiting. Motion sickness. को मोशन सिकनेस से भी वॉमिटिंग होती है. आई होप मोशन सिकनेस पता है. क्या होता है? तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम्हारा क्या मतलब? सर मोशन मतलब ये सिकनेस होता है, उसकी वजह से. तो मोशन सिकनेस की वजह से होता है. एट सर्टेन केसेस वेरी रेयर, बट देयर आर अदर पीपल जिनको स्मेल के वजह से भी होता है. ओके, पेट्रोल, डीजल वगैरह 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 इनके वजह से भी हो सकता है. I am very much horrible in terms of disease. Disease का smell आया तो मेरे पास chances ज़्यादा रहेगा कम. Okay. Next. Vomiting लिखा हुआ है, पढ़ लेना. फिर आता है the inner lining of the stomach. Inner lining of stomach is lined by a specialized cell known as the gastric gland. तो ये cells बन जाते हैं आपका second gland, is known as gastric gland, which is filled by the inner lining of the stomach. It is colorless, highly acidic liquid containing water, some salts, hydrochloric acid, and an enzyme called as pepsin. Actually, सिर्फ एक ही enzyme नहीं है, बहुत सारे, दो है. As it serves to function, it kills germs which may have entered along with the food. It activates pepsinogen to proteins, to act on proteins. Pepsin drives proteins about 20% only into peptides. In fact, the pepsin is first as pepsinogen, which is then changed into pepsin by hydrochloric acid. In short, देखा जाए तो there are two parts of the stomach. एक होता है pepsinogen, दूसरा होता है HCl. The HCl function is to act as a disinfectant. The so-called 7-star hygienic पानी पूरी समोसा जो आप खाते हो, उसको treat करने के लिए HCl takes care of. यानी germs इससे. Second, it activates the pepsinogen to pepsin, ताकि further वो digest करता है protein into peptides. At the same time, there is one more enzyme in our body, that is oxygen, and वहाँ पे लिखा है देखो, prorenin. एक और एक enzyme है prorenin, which is converted into renin again in the presence of HCl. ये करता क्या है? The renin also is an enzyme, जैसे कि वो pepsinogen convert हो रहा है pepsin में, जैसे prorenin convert होता है renin में, which converts casein, milk protein, into paracasein, a peptide insoluble. पंखा बन जाए, एसी बन जाए, सब गर्मी में मार. आगे वाला पीछे वाला लगा. आगे वाला ताकत करता है. नहीं बताइए पीछे वाला लगा. किया. इसको बहुत ठंडा ठंडा हमेशा ऐसे ही होगा ना. हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसे. अरे भी अगर ठंडा भी होगा, चिली भी होगा ना, तभी हम बंद नहीं करेंगे. सर फिर हमारा क्या हालत होगा सर? होगा थोड़ा लेट करंट इसकी तरह. The food stays in the stomach for about 3 hours and attains a pulp-like form called the child. I will open the instrument to allow the child to move the intestine little by little. धीरे-धीरे food आगे बढ़ता है. Then comes small intestine. Divided into 3 regions. What are 3 regions? Duodenum, jejunum, and ileum. It is the duodenum, the loop है. इस loop के अंदर the second gland is there, that is pancreas. So पहला small intestine is about 7 meters long, 2.5 centimeter wide. It is coiled and folded in the abdomen. 3 subregions are as follows: duodenum, padlina, jejunum, and ileum. Yes, you can read on your own. उसके बाद the inner lining of ileum is made up of great number of tiny finger-like portions called villi. The villi is the surface area of the intestine, nearly 8 times that of the outer body surface. It facilitates the absorption of natural food.
Between the villi small holes to which the intestinal juices filled by the glandular cells is poured into the lumen of the intestine. Each villus is covered by a single thick epithelium inside the intercontinent artery, vein, and intercontinental blood capillaries, and the lymph vessel called as lacteals. Now, diagram. If I take a cross section of a small intestine, yes, small intestine. Intestine has numerous villi. This part is known as lumen of small intestine, जहाँ पे food particles होंगे. This food particles would be absorbed into this by the villi. अब अगर single diagram बनाओ तो villi का तो ये है villi single part, which is made up of I'm drawing a rough diagram. मैं इतना properly दिखा नहीं रहा हूँ. तो that cells मतलब ये एक part जो एक cell represent कर रहा है, they're made up of single epithelial cells. Now why single epithelial cells? Single epithelial cells helps in faster diffusion. Single layer है तो food can easily diffuse from one part to, so lumen यहाँ food यहाँ पे होगा. From there the food will pass through this epithelial cells into the nearby blood capillaries. तो यहाँ पे आपके blood capillaries होंगे, which would be from there the food will enter into these blood capillaries. But apart from that, blood capillaries are part of artery and a vein. But apart from that, there is one more vessel which is present. It is in the center, parallel to the blood capillaries, known as lacteal vessels. Now, what are lacteal vessels? मैं बोल रही हूँ माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये वेला है. हाँ, they are microscopic in nature. So the structure can be seen only under electron microscope. Okay? इलेक्ट्रॉन्स. हाँ, इतना little electron का होगा. Normal air structures microscope में. Now, this lacteal vessels also form parallel to the blood capillaries. Blood capillaries carries the digested food, which are proteins or carbohydrate forms. प्रोटीन में पेप्टाइड्स या अमीनो एसिड्स होगा, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज माल्टोज कैटेगरी का. बट वन थिंग इज वंडरफुल ओवर हियर. ओके, डाइजेस्टेड फूड यहाँ पे चला जाता है कैपिलरीज में, बट अ मेजॉरिटी ऑफ द फैट्स आर टेकन बैक इन द लैक्टेल्स. सो फैट्स जिसे अपन फैटी एसिड्स या मिसोला बोलते हैं, they are absorbed not in the blood capillaries but they are absorbed by the lacteals. It's a nature's way to keep the bloodstream free from the fats part. So इसके लिए बहुत सारा fatty acids are directly absorbed through a parallel system known as lymphatic system, जिसे अपन lymph vessels बोलते हैं. Lymph vessels present in the small intestine are known as lacteal vessels. उनका नाम दिया गया. जैसे अपन बोलते हैं अपने बॉडी में arteries or veins है. The one which is going to the lungs are known as pulmonary artery या pulmonary है तो artery और vein ही, तो हमने नाम दिए. सेम वे ये lymph vessels ही है जो पूरे बॉडी में है, बट इंटेस्टाइन में जो मिलते हैं उनको नाम दिया है lacteal vessels. Am I clear? हाँ ना? चलो मैं कुछ खबर देता हूँ, शायद जल्दी थोड़ा और इनको हो जाओगे. ये लास्ट चैप्टर है. हाँ. जितना जल्दी खत्म होगा उतना जल्दी छोड़ दूंगा ना. कंडीशंस अप्लाइड. तुम्हारा ऐसा एनकरेजिंग और थोड़ा मूड अच्छा हो, ऐसे मरे दिखो तो मैं भी अपना पेस एकदम स्लोली जाऊं. I hope now things will move faster, better. Then comes the small intestines of both digestion and absorption. It receives two types of juices, the bile and the pancreatic juice in the duodenum, and its own will secrete the intestinal juices in the ileum. Up. This is the stomach part and this is the duodenum part, first part of the small intestine. Stomach के यहाँ पे होता है आपका liver और इस loop के अंदर होता है आपका pancreas. So what happens?
From the liver there is the bile duct and from the pancreas there is the pancreatic duct. ये दोनों duct commonly open होते हैं into the duodenum as a hepatopancreatic duct. आपके बुक में next page पे you can see over there the diagram दिया हुआ है liver bile duct. ऊपर का पार्ट फ्रॉम लीवर लिखा हुआ है उसको बोलते हैं हेपेटिक डक्ट. जो लीवर से आ रहा है उसको हेपेटिक डक्ट कहा जा रहा है. एंड द लीवर फंक्शन इज टू प्रोड्यूस द बाइल जूस. दिस बाइल जूस इज स्टोर्ड टेम्पररीली इन अ स्मॉल पार्ट नोन एज गॉल ब्लैडर. तो आपका ये लीवर है. लीवर में ये है आपका हेपेटिक डक्ट और ये है आपका gall bladder. So whatever liver is producing, some of the bile juice is stored in the gall bladder. कुछ bile juice directly liver से आता है और कुछ bile juice stored किया वहां से आता है. तो ये आपका hepatic duct है और ये आपका cystic duct है. वहां पे लेबल किया है. डायग्राम दिया जाएगा. They may ask you to label the diagram. Okay? So, because bile is not the enzyme itself. So as and when required, it will be used because liver is the largest gland of your body. Second, it plays the most vital role in our body. Glucogenosis, glycogenosis, then your conversion of glycogen to glucose, glucose to glycogen, detoxification, then your portal vein, all that would be ending up onto the liver part. So इसीलिए the whatever juices are produced by the liver bile, कुछ डायरेक्टली बन के डायरेक्टली एंटर होते हैं बट सम ऑफ देम वुड बी स्टोर्ड फॉर पार्ट. ज्यादा बन के स्टोर कर देते हैं. बाइल कंटीन्यूअसली प्रोड्यूस. यस, इट इज कंटीन्यूअसली प्रोड्यूस. सर आवर गॉलस्टोन्स फ्रॉम आर ऑफिस लाइक नो खत्म करो. देन कम्स अप सिस्टिक डक्ट से द फ्लूइड कम्स आउट इनटू द कॉमन बाइल डक्ट. नाउ व्हाट इज द कॉमन बाइल डक्ट? जहां पे ये वाला पार्ट, जहां से गॉल ब्लैडर और लीवर का पार्ट कनेक्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं अपन कॉमन बाइल डक्ट. अब कॉमन बाइल डक्ट नीचे जाके यू सी ओवर देयर इट इज गोइंग इनटू द पैंक्रियाटिक पार्ट. वहां पे उन्होंने एकदम थोड़ा अलग अलग दे दिया. मतलब सा नीचे ऊपर ग्रीन पार्ट दिया है, नीचे व्हाइट पार्ट दिया है. दे आर शोइंग समथिंग लाइक दिस. दो अलग पार्ट दिया हुआ है. टेक्निकली वो अलग नहीं है. टेक्निकली वो ऐसे है. इसको बोलते हैं कॉमन या हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट. मतलब लीवर का और पैंक्रियास का दोनों का डक्ट कॉमनली एक जगह पे जॉइंट होता है एंड दैट ओपन्स इनटू द डिओडेनम पार्ट. नाउ दिस टू ग्लैंड सीक्रेट्स मेजर थिंग्स. सबसे पहले लीवर सीक्रेट्स बाइल जूस एंड द पैंक्रियास सीक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस. अब पहला बाइल जूस का फंक्शन देख लेते हैं. बाइल yellowish green watery fluid produced in the liver, which is transferred through the hepatic duct. The hepatic duct will join the cystic duct to form common bile duct. The bile may flow directly into the duodenum, or it may generally happen at temperature in the gallbladder. The color of bile is due to certain pigments, biliverdin and bilirubin. What is the color of the bile? Yellowish green. Okay. Produced by the breakdown of the dead and bone of RBCs. RBCs are the liver is known as the graveyard of RBCs. आपका liver और spleen दोनों में आपके RBCs WBCs breakdown होते हैं. Then bile contains a lot of sodium bicarbonate. Please underline sodium bicarbonate, which neutralizes the acidic content of the food received from the stomach and make it alkaline to enable the pancreatic and intestinal enzyme to act. Okay, underline alkaline. The small intestine में everything which is there has to be alkaline for its function to be properly done. Then bile salt reduces the separation of fats and break down them into tiny droplets. Emulsification for providing greater surface area for action of enzymes. Overall, the role of the bile is as follows. Acidic chyme is converted into alkaline chyme in the presence of bile, that is sodium bicarbonate, and fats are converted into emulsified fat in the presence of bile. अब एक एक करके समझेंगे. सबसे पहले bile secret हुआ, which neutralizes the food coming from the stomach. Stomach में कौन सा food होता है? Bolus. What is the nature of food? Acidic.
तो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको अल्कलाइन क्यों बनता है? एंजाइम्स कोई स्पेसिफिक नेचर में और उनको एब्सॉर्ब होना है तो एसिडिक then what protects the stomach from acid? Mucus. The mucus is thick in the stomach, but compared to small intestine में ये बहुत चुने जाते हैं. So if that same acidic food comes into small intestine, what will happen? It will damage the small intestine. So in order to prevent that, there is that alkaline nature. Second, because alkaline nature is there, that is basic requirement for all the enzyme to function in small intestine. The pancreatic juice functions in alkaline medium. The intestinal juice also functions in alkaline medium. So, bina alkaline medium के the food is of no, the reaction will not come to, will not function on it. It will have a halt over there. Am I clear? Dusra, bile brings about emulsification of fats. What is emulsification? वहां पे लिखा है fats into emulsified fats or emulsion. आपको चाहिए तो वहां पे ब्रैकेट में लिखना फैट्स के नीचे, फैट के नीचे लिखना लार्ज फैट ड्रॉप्स प्लेट्स, लार्ज फैट मॉलिक्यूल और लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल्स, फैट के नीचे लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल्स और इमल्सिफाइड फैट के नीचे स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स, इमल्सिफाइड फैट के नीचे. Now what do you mean by this? Simple example. I keep my hand like this. I put a water over here and put a 1 or 2 drop of oil. क्या दिखाई देगा? Oil on top of the water. Oil on top of the water. Single drop. आया ना? Now I try to mix it like this. Will it mix? No. But it will form small water droplets of oil, which are known as emulsion. Emulsified fats. So it is trying to get mixed but hota nahi and break down to small tiny droplets. Why? The smaller the droplets, greater is the surface area for further dilution. तो bile उसका emulsification कर रहा है, उसके ऊपर का surface tension कम करके it breaks down into small particles so that it can be easily broken down into further. Am I clear? यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आएगा. Bile doesn't have any enzymes but still plays a very important role in digestion. We can write the bile contains of bile juice, that is, and sodium bicarbonate. Sodium carbonate neutralizes and bring it to alkaline medium for all the enzymes to function, and also the sodium bicarbonate produces the surface tension onto the fats, thereby bringing about emulsification of fats. फिर आता है pancreatic juice. Pancreas secretes pancreatic juice, which is a mixture of many enzymes. तो वहाँ पे नाम लिखा है देखो, amylopsin, trypsin and trypsin लिखा है. ऊपर रिएक्ट मतलब वर्ड फॉर्मेट में लिखा है, नीचे थोड़ा प्रॉपर रिएक्शन फॉर्मेट में लिखा होगा. सबसे पहला amylopsin, also known as pancreatic amylase, digest leftover starch into molecules. जब ऊपर डाइजेस्ट हो चुका है तो फिर क्यों चाहिए? क्यों? आंसर वहां पे लिखा हुआ. Leftovers. क्यों? टन स्कूल में टीचर पढ़ा रही है, हमने डब्बा खोला, लेक्चर के टाइम में डब्बा खाया, लेक्चर इज गोइंग, मुंह में डाला, and unknown teacher called you for some other purpose. Are you like, have you given time for chewing, No. mixing the saliva? No. तो उधर से बच गया नीचे पहला. दूसरा सेम गोज, यू आर ईटिंग समथिंग, फ्रेंड ने बुलाया, आजा नीचे, मम्मी जल्दी जाना है, swallow and just move on. Okay, so that time saliva doesn't function properly, तो उधर से मिस हुआ नीचे, pancreatic amylase same function. Am I clear? Then comes trypsin. Acts on the remaining proteins and polypeptides to produce smaller peptide and amino acids. Trypsin is first written in the inactive form trypsin. जैसे pepsin pepsinogen form में था, trypsin trypsinogen form में, which is converted into active form by another enzyme enterokinase. So reaction format में देखना, enterokinase
also called as enteropeptide, secreted by the lining of the duodenum. So small intestine का lining जो है वो भी glandular है, which is forming the last gland of this level known as intestinal gland, which secretes enterokinase, जो convert करता है trypsinogen into trypsin, which break down the peptides into amino acids. Smaller peptides are amino acids. My question: what are peptides? Okay, smaller molecules. The protein chain is known as amino acid chain is known as peptide. So when I have protein, it is made up of amino acid that can be in a form of a round structure. Okay, मतलब एक थ्रेड को आपने साथ गोल 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 घुमा के बॉल बनाया तो वो एक बॉल बन जाएगा, वुलन का बॉल होता है. But I open that thread and cut into small segments. What I say, woolen का एक segment of thread है. So when I bring it into a linear form, I say it as a peptide. अब वो बड़ा होगा तो bigger peptide chain, अगर छोटा होगा तो smaller peptide. Am I clear? हाँ. वरना I'll go too slow now. Next. Trypsin acts on emulsified fats to split them into fatty acids and glycerol. अब सबसे पहला चीज इंपॉर्टेंट समझना है. Trypsin acts on emulsified fats to split them into fatty acids and glycerol. And यहाँ पे last component बन जाता है fatty acids and glycerol. And that is why eating fats do not make you full for longer period of time. सबसे पहले जो अपने बॉडी में डाइट होता है वो फैट सबसे आसान है. So भले फैट्स कॉम्प्लेक्स है पर पेट खाली करने के चक्कर में सबसे पहले खत्म हो जाएगा. So अगर आपने मान लो कि कुछ फैटी चीज खाई है, तला हुआ या फिर बर्गर बहुत ज्यादा फैट से बना हुआ घी में बना, आधे घंटे बाद सर वापस भूख लगी है बिकॉज वो फैट्स था प्रॉपर. सो आपको वो सेटिस्फाई नहीं करेगा फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. पर अगर आपने प्रोटीन खाया है, कार्बोहाइड्रेट का, तो इट विल गो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रादर देन फैट्स. सो वहां पे intestinal juice contain eruption. So the next gland is intestinal gland, which secretes intestinal juice, which contain eruption, a mixture of peptides to convert remaining peptides into amino acids. Maltase is maltose into glucose, lactase is lactose into glucose. उसका जितना भी नाम लिखा है वो सब रिएक्शन फॉर्मेट में लिखे हुए हैं. Peptides into amino acid, peptidases is eruption. Maltose into glucose, maltase. Sucrose into glucose and fructose, sucrase. Lactose into glucose and lactose by lactase. Emulsified fats, lactase into fatty acid glycerol. यहाँ पे पूरा डाइजेशन खत्म हो जाता है. फैट्स आर ब्रोकन डाउन, लाइक लैक्टोज इज ब्रोकन डाउन, जो भी बचा कुछ है सब कुछ ब्रेक डाउन. इसके बाद कुछ भी बचा है तो वो हो जाएगा फीकल मैटर. ओके, तो यहाँ तक कंप्लीट डाइजेशन वुड टेक प्लेस. देन कम्स एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. अब जो डाइजेस्ट हुआ, अभी भी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम पार्ट में ही था सब कुछ. अब इलियम में विलाइल स्ट्रक्चर्स है जो आपको एब्जॉर्ब करना चालू करेंगे. सो the amino acids and the simple sugars glucose, fructose, lactose are relatively small size molecules which are absorbed to the thin epithelium of the villi and reach the blood capillaries to finally enter the blood vessel. First to reach the liver to the hepatic portal vein. Please underline hepatic portal vein. बहुत ही important term है. इस साल भी, अगले साल तो पूरा एक पैराग्राफ ही है इसके. सुना है? हाँ या ना? hepatic vein से hepatic portal vein, hepatic vein. मतलब अब ध्यान देना. Blood circulation first to reach the liver through the hepatic portal vein. मैं explain करूँगा क्या है. Then the fatty acids and glycerol are absorbed into the lymph vessels or the lacteals. जो मैंने कहा था, जो प्रोटीन्स है या कार्बन, the fatty acids जो है वो lacteal vessels में जाएंगे. Carbohydrates, simple sugars और amino acids will be absorbed by the blood capillaries. Okay, तो वही लिखा हुआ है. Which forms the network allows the body to ultimately empty its content into the bloodstream. The food passes very slowly through the intestine, taking about 4 hours to enter the last part of the last part, which is the large intestine. अब आते हैं अपन, what do you mean by that hepatic portal vein? What is vein by definition? carries blood deoxygen vessel and carries Carries except the pulmonary deoxygen blood, except pulmonary. और कुछ better option?
Vein is a blood vessel with thin walls and It carries the blood towards the heart. Good. So that's the proper definition. A blood vessels which carries the blood towards the heart is a vein. अब अगर मैं उसको डिओक्साइड लिखता हूँ तो मुझे एक्सेप्शन लिखना जरूरी है, okay? वरना इट कैरीज द ब्लड टू द हार्ट. अब ध्यान से देखना. From an organ, the blood vessel starts as a capillaries, and then it forms of venules, and then veins to ultimately end up into the heart. इसको क्या बोलेंगे अपन? Simple definition में इसको vein बोलेंगे. A vein is a blood vessel which starts as a capillary from an organ and ends onto the heart. Okay, or carries the blood to the heart is what we say as vein. अब इस केस में ये organ क्या है? Stomach, small intestine या large intestine. ये तीन ऑर्गन हो सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल लेते हैं लास्ट के दो गर्ल्स, तो सगी बहनें, करोड़ों की प्रॉपर्टी, 500 करोड़ प्रॉपर्टी, नो वन आगे पीछे, सिर्फ दो ही बहनें, एंड दे हैव अ वेरी गुड रिलेशन अमंग देमसेल्फ. आई होप वेरी गुड का मतलब समझ में आता है. मतलब वो 24 घंटा 24/7 प्रे करते थे, तू कब मरेगी वो कब मरेगी, जो भी मरा प्रॉपर्टी उसके सामने भी रहेंगे ना. वन फाइन डे ये इसको अपने घर पे खाने के लिए बोला. ऐसे दिखाते हम अच्छे हैं, पर मन ही मन में इसी को मारने के फुल प्लान करते रहते हैं. सो नाउ शी कॉल्स हर टू द डिनर. डिनर में आते हैं, हाँ उसने खाने में जहर डाल दिया. अब व्हाट विल हैपन? क्या होगा? The food which is having the poison ultimately would be coming in this part. Ayana, these digested nutrients along with the poison would be absorbed by the small intestine, villi, and where they will go? They? Ayana. So भगवान ने हमें बहुत सोच समझ के बनाया है, जितना हमने सोचा भी नहीं उससे ज्यादा सोच के हमने बनाया. Okay? We do not have something like this over here. हमारे बॉडी में there is exception cases. That is, from an organ, when a vein starts as a capillary from an organ, ends as a capillary in another organ before entering into the heart. Then such type of vein is known as portal vein. और इसको क्या बोलेंगे? सिफ वेन. ये तो बैड डेफिनेशन है ना, फ्रॉम एन ऑर्गन टू द हार्ट, तो ये तो वेन हुआ. बट फ्रॉम एन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन बिफोर एंटरिंग द हार्ट इज नोन एज पोर्टल वेन. ये कौन सा ऑर्गन हो सकता है एग्जांपल? अब इन मैमल्स देयर आर 3 पोर्टल सिस्टम्स: हेपेटिक, हाइपोफेशियल एंड रीनल. 3 है मैमल्स में. आई होप मैमल्स समझ में आता है. मैमल्स में हम क्या है? मैमल्स में आते हैं. सो हमारे में 3 ना होके एक नहीं है, सो वी हैव ओनली 2. मेरा हेपेटिक पोर्टल में निकल लिखा है, दूसरा हाइपोफेशियल पोर्टल. हमारे में रीनल नहीं है. टटका और रैबिट वगैरह इनमें रीनल मिलता है, पर हमारे में ये नहीं होता ना. बिना हेपेटिक के हम शायद जिंदा भी नहीं रह पाते. दैट इंपॉर्टेंस इट इज. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? हेपेटिक पोर्टल वेन में ये ऐसे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन तीनों से ब्लड वेसल्स जाते हैं and they enter into the liver. That is why these blood vessels are known as hepatic portal vein, which from the liver goes to the heart.
सिंपली नोन एज हेपेटिक वेन। अब इसका मेन फंक्शन और फायदा क्या होता है? Whatever food would be absorbed at this point will go first where? पहले कहाँ पे जाता? Small intestine. अच्छा. डायरेक्टली हार्ट पे। पर अब लीवर के बीच में हॉल्ट है। What does the liver do? Liver acts like a scrutinizing agent. जितना चाहिए अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स है जो भी है वो उसको मॉनिटर करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, स्टोर करेगा। एक्सेस ग्लूकोज है, 10 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है, तो बॉडी को सिर्फ 4 चाहिए, तो बाकी जो 6 बचा है उसको स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। अमीनो एसिड अगर आ गया, अमीनो एसिड कैन नॉट बी स्टोर्ड, तो ब्रेक डाउन द अमीनो एसिड्स एंड थ्रो आउट द वेस्ट, तो वो लीवर करेगा। जहर दे दिया था, पहला लीवर में आएगा, हमने टिश्यू चैप्टर में, सेल चैप्टर में पढ़ा था, SER डिटॉक्सिफाइंग यूनिट, वेयर इज SER प्रेजेंट मैक्सिममली इन द लीवर। सो लीवर में SER बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से टैकल्स द पॉइजनस सब्सटेंस। तो सो कॉल्ड हाइजीनिक 7-स्टार फूड जो अपन खाते हैं, उसमें देयर माइट बी सम केमिकल व्हिच मैच टू द पॉइजन, दैट वुड बी टेकन केयर बाय द लीवर rather than directly going to the heart. So that is the importance of hepatic portal vein. It regulates the food going towards the heart. It detoxifies the food going towards the heart. वो जो फिर ग्लूकोज स्टोर करता है वो फैटी लीवर। Yes. उसको अपन तू उसका भी तो लिमिट होगा ना, अभी तो थोड़ा खाएगा सो होगा नहीं हुआ है, और तो ठूसते जा रहा है कम ही नहीं हो रहा है, तो फैटी लीवर होगा ही होगा ना। सर वो सेकंड वाला क्या? हाँ, हेपेटिक पोर्टल वेन। ये एक ही है वो ना? हाँ, हाइपोफिशियल पोर्टल वेन। ये होता है हाइपो, मतलब हाइपोफिशियल कम्स फ्रॉम द वर्ड दैट इज नथिंग बट योर ब्रेन। ब्रेन में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच। सो हाइपोथैलेमस से जो भी बनता है वो डायरेक्टली हार्ट पे ना जाते हुए पहला पिट्यूटरी में जाता है, और यहाँ पे इट इज द हार्मोन चल रहा है, और फिर पिट्यूटरी से फिर आगे जाता है। सो वहाँ पे हाइपोफिशियल। सर तो अगर पॉइजन ब्रेन पे अटैक कर दिया तो तो पॉइजन अगर तुझे मुंह से दिया जाएगा, ब्रेन पे जाएगा, किधर जाएगा? And that is why when you drink the poison, chances of survival is more, unless cyanide नहीं है। पर अगर तुम्हें इंजेक्शन दिया गया या कुछ किया गया, तो it immediately goes into the blood, then it would be a very difficult situation. Am I clear? Next, फिर आता है large intestine. Large intestine about 1.5 meters long, 3 parts: cecum, colon, and rectum. Cecum is small blind pouch at the junction of small large intestine. The small intestine है, large intestine के बीच में joint के यहाँ पे there is extra growth known as cecum or appendix. Okay, there is a narrow worm shape called vermiform appendix, and it is inflamed causes appendicitis. And today it is functionless organ. Appendicitis किसी का हुआ है? Okay, appendicitis is nothing but swelling of the cecum or appendix. अपेंडिक्स ऐसा सी शेप का स्ट्रक्चर होता है जो स्वेल होता है। अब यहाँ पे लिखा है इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, इट इज स्टिल अ डिबेटेबल क्वेश्चन। कई बुक्स में इसको वेस्टिजियल का आता है, कई बुक्स में कहा था इट इज समथिंग टू डू विद द इम्यूनिटी, कई बुक्स में कहा था इट इज समथिंग टू डू विद द टॉक्सिसिटी, कुछ फंक्शंस तो है उसका, बट नॉट स्टिल क्लियर टू यू। ओके, अब देन एक सी शेप स्ट्रक्चर जो बहुत छोटू सा है, पर स्वेल होने के बाद वो स्वेल होता है, और एक दिन दिवाली धमाका होता है, it bursts. What is present in that is all the toxic and poison substance. पॉइस Not is immediately spread into the body. So within half an hour अगर आप इसको क्लीन आउट कर पाए, हॉस्पिटल में हो, तो आप इस दुनिया में हो। आधे घंटे बाद आप दुनिया में थे, कि इतना ही फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अपेंडिसाइटिस, जिसे अपन अपेंडिक्स का पार्ट स्वेलिंग बोलते हैं। सपोज देयर इज अ पर्सन लाइक हिम, घर पे गया, खाना खाया, सो गया, रात को 12 बजे उठ रहा है, मम्मी दर्द कर रहा है, पेट में दर्द कर रहा है, मम्मी क्या बोली? नेफ्टल्स पास का वो है, दवाई खा लो।
खुद ही नहा रहा या कुछ ऐसा गैस हुआ रहेगा या कुछ सना सना खाया होगा, ज्यादा खाया होगा वगैरह वगैरह, मम्मी उसको नॉर्मल कुछ दे देगी, अब किस तरह ठीक। अब 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया, दर्द बढ़ती जा रहा है, बढ़ती जा रहा है, बढ़ती जा रहा है। Okay? He has to go to the hospital to get checked क्यों हुआ है? अगर डॉक्टर अगर बहुत अच्छा है तो appendicitis need to immediately operate. Okay? Why I am saying this? Practical experience. 12 बजे उठा, दर्द कर रहा है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बजे हॉस्पिटल, शाम को 6 बजे आंख खुली, अपेंडिसाइटिस को ऑपरेशन मेरा। बट द ओनली प्रॉब्लम वाज, और थोड़ा 1 आध घंटा और लेट हो गया होता तो मैं लेट हो ही गया। एंड द वर्स्ट पार्ट वाज आई वाज नॉट विद माय पेरेंट्स, आई वाज विद माय अंकल्स हाउस। तो वो भी उनका ये था कि मैं छुट्टी पे था, वैकेशन था, तो आई वाज विद माय अंकल्स हाउस, मस्त राजा मार के लाइफ। सुबह 10-11 बजे उठने का, आंटी नाश्ता, फिर खेलने जाने का, फिर आंटी ना खाना। सो दैट डे आई गॉट अप एट 12 o'clock, चलो पार्टी ये कर वो, कभी रात को काम, उस टाइम पे फोन तो थे ही नहीं, we did not have phones to contact each other over. So वो आंटी मुझको ये खिला रही है, वो खिला रही है, मतलब ये जूस, वो थोड़ा फनल का अपना इसका सोप का पानी, इसका पानी, उसका पानी, ताकि मैं सुबह करते करते 6 बज गया। 6 बजे भी अरे सोप का पानी, फिर 8 बज गए, आंटी मुझे अबे डॉक्टर अभी 8 बजे नहीं मिलता है, आप थोड़ा टाइम क्लिनिक सोचो ना, आपको 9-9:30 बजे पहला क्लिनिक खुलेगा तो दिखा देंगे। 9:30 बजे डॉक्टर आया, दवाई दी, फिर खाया, फिर भी दर्द कम नहीं हो रहा है, तो 10:30 बजे when my mom went to the office for working, तब वहाँ पे हमने कॉल किया तो मम्मी बोलती है काम करने के लिए लेगा। So we went and luckily because my mother is a staff nurse, डॉक्टर इमीडिएटली वहाँ पे ही थे, तो उन्होंने देखा, एक्सपीरियंस डॉक्टर था, इमीडिएटली टेक हिम इनटू ऑपरेशन थिएटर। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, रात को जब आँख खुली सबसे बैंड लगा था, दिख रहा था, फिर पता चला कैसे कुछ तो हुआ है। Okay? फिर आई वाज वेरी क्यूरियस, मेरा ऑपरेशन 3rd या 4th में हुआ था, आई वाज वेरी क्यूरियस क्या हुआ, तो मैंने उसको बुलाया, तो क्या डॉक्टर बोलता है सब कुछ तो दिखा है, बस दिखाओ क्या है। Okay? तो मामूली देखिए नो, तो मैंने उन्हें मेरी रखा था देखने के लिए, तो मैं देखा, मैं फर्स्ट एक्शन वाज पुल मी प्रॉन्स, अच्छा ऐसा दिखता है वो क्या? एग्जैक्टली प्रॉन्स, मतलब आई वुड से कि वो प्रॉन्स का जुड़ा भाई था, तो मुझे लगा प्रॉन्स खाने की वजह से जुड़ा भाई। जी एट दैट टाइम मैं मेंटल वाज 479, तो आई वाज लाइक, फिर टाइम लगा थोड़ा समझने के लिए बाद में, but that was one thing, luckily I was safe. Now what is the scenario behind this is, मुझे रात को दर्द हुआ and I could bear that till morning and फिर ऑपरेट किया गया। Now 2 साल या 3 साल, I think 4 साल के बाद, I was 7th or 8th में, one of my friend, a girl basically, हमारे कॉलोनी में रहती थी, हम लोग साथ में खेलते थे, and she was like a tom girl, tom boy की तरह, tom boy. She used to play cricket with us. Okay? अब ध्यान देना, वो क्रिकेट पे बैटिंग कर रही है, नथिंग, मतलब 2-3 घंटे से हम लोग खेल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है। सडनली शी कोलैप्स डाउन एंड वी रश टू द हॉस्पिटल।